Hi, I'm Bhavna Somaya. A year ago, we launched a new podcast show called Rangmanch. And a year and a month down the lane, we have completed 50 episodes of Rangmanch. It has been my privilege and honor to talk to the biggest and the brightest talent on theatre, writers, directors, visionaries, and more. Years giving you a glimpse of the year that has passed by. Somehow, I don't know, when I passed my 11th standard, I wanted to take admission in a college where dramatics were there. तो किरुडिमल कॉलेज में एडमिशन लिया. मैं हरियाणा से दुबला पतला जूती पहनने वाला, जिसको कपड़े पहनने का शौक नहीं. तो मेरी वो प्ले मेरे को कॉलेज में जब बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला ना, फर्स्ट ईयर इंटर क्लास कंपटीशन में, तो सडनली मेरी तो चाल ही बदल गई. लोग मेरे को अलग तरीके से देखने लगे, क्योंकि एक्टर को देखना अलग बात होती है ना. एक्टिंग एक ऐसा टैलेंट होता है विच इज स्पेशल, यू नो, सबको तो आता नहीं है. तो मेरी चाल बदल गई. फिर मैंने वहां हमारी एनुअल प्रोडक्शन होती थी, जो मेरे सीनियर थे द प्लेयर्स में, यू नो. तो एक मिस्टर अभिमन्यु प्ले था, लक्ष्मी नारायण लाल जी का लिखा हुआ. तो और उसमें मैंने एक छोटा सा पिद्दी सा रोल किया था. और तब मैंने एक्चुअली, मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली थिएटर में प्रोसीनियम थिएटर जो होता है ना, यार ऑडियंस और थिएटर पे जो खड़ा है, स्टेज पे खड़ा है, उसमें डिफरेंस होता है. ही इज ए डिफरेंट पर्सन. और जब हूटिंग हुई है, मैंने मिस्टर जीके का रोल किया था, और मेरे हाथ में ड्रिंक थी विच वाज कोका कोला ऑफ कोर्स, यू नो. और वो अपना मैंने पी थी. और जब हूटिंग वगैरह शुरू हुई तो किसी ने चिल्लाया, कोका कोला पी रहा है. तो मैंने बोल दिया, तू भी पी ले. I broke that wall. I didn't know. I didn't understand. I didn't have that kind of training or this thing. मैं तो सोचा यार ऐसी ये हंसी मजाक में होता है असल में, है ना. रंगमंच की एक सबसे बड़ी खूबी ये है एक कलाकार के लिए, कि वो खूबी कह लीजिए उसको, मैं खूबी कहता हूँ, कि हर बार जो शो है वो एक तरह से नई फिल्म रिलीज है. फिल्म में या स्क्रीन काम में जो हमने एक बार शूट कर लिया वो हिस्ट्री है, फिर वो हमेशा के लिए छप चुका है और लोग वही देखेंगे. लेकिन नाटक की खूबी होती है कि आज अगर आपने एक शो पृथ्वी पे किया और कल आपका शो जो है वो सेंट एंड्रूज में है, अगले दिन मैं बॉम्बे का नाम है, तो वहां क्या होता है, एक तो वो नया शो होगा, नई ऑडियंस होगी, नया परफॉर्मेंस देखेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू जज यू बाय व्हाट यू डिड yesterday. They will judge you what you are going to do today in front of them. आपकी परफॉर्मेंस नाटक की कितना अच्छा है, कितना बुरा है, वो आपको उस वक्त ही आपको मिल जाएगा उसका रिस्पॉन्स. अगर आप नाटक कर रहे हैं नसीर सर के साथ, he expects you to read your play every day and come for rehearsal. And he will, उनको पता चल जाएगा कि आपने पढ़ाई नहीं किया. मतलब आप पहला वर्ड बोलेंगे और वो बोलेंगे कि तुम्हें घर जाकर पढ़ाने. And I realized, I think through Naseer sir, that there's nothing called learning the lines. You have to just read your play. And he does not encourage you to leave your script for a very long time. So, what about Makarand? हम ओपन कर रहे थे, और पहला जब शो ओपन हुआ था वो 3 घंटे का था. और मैं नाटक को मुझे बोलती थी, मैंने कहा आप इतना लंबा नाटक क्यों करते हैं. और लिटरली ऐसा होता था कि मैं विंग्स में जा रही हूँ, अपना मतलब विंग से एंट्री लेने जा रही हूँ, और मुझे बेटा सुनो, तो हाँ साहब, ये मत बोलना, अभी ये बोल देना. Oh my God! I used to turn white. क्या? तो मैं से बोलती थी, मैं कहा सर मैं जा रही हूँ स्टेज पे. He would just change the play because he's like नाटक घटते ही बनता है. The actors are here, my lord, the best actors in the world, either for comedy, tragedy, history, pastoral, comical, historical, pastoral, tragical, comical, historical, pastoral, scene undivided or poem unlimited. Seneca cannot be too heavy, nor Platus too light. For the law of writ and liberty, these are the only men. And the house thundered into an applause because that. And I knew somewhere there I had managed to break that fourth wall between the audience and me, and I knew that the magic of theatre is something that I would take to. And then I went on to performing at the Prithvi. I actually wasn't very happy with the jobs that I was doing. I wanted to be in the make-believe world of theatre, and I like the atmosphere of theatre. I like the place where I could express myself. So whatever came my way, I did it. So there was no conscious choice that, I'm going to do this and I'm going to do that. Whatever life threw at me, I just took it, I grabbed it, and I didn't think much about it. So as an actor, that was my choice when I was in college and thereafter, because I was very good at that.
As a director, it was circumstantial. So one thing or the other, the fact is that I wanted to not do anything but be in theatre. So to do that, I would grab whatever I could get my hands on. My mother died in 84. 83, she had her first festival, celebrating 5 years. And her wish was that every year we should have annual festival. And it should be a celebration of theatre, like what all true festivals should do. They're like a vitamin B complex jab into the trade. You know, it gets the people together and gives a certain amount of excitement, both within the fraternity and also with the audiences. So 84 mein, it wasn't possible because she was ill and then she died in September. So 84. So then I became the trustee after that. Or 84 mein, after that we came back. She died in England. We were in England. The last few months she was there. So people were saying, Abhi Prithvi Theatre will shut down. So I came back and I said, listen, nothing doing. We were all in London at the time and I was shuttling back and forth. Utsav was being completed. Feroz Khan, Abbas Khan. Feroz has been involved with Prithvi right from the inception, from the beginning. And he was also close to Mum and, you know, he's also very theatre and very attached to Prithvi. So I remember this clearly. Mum died in the morning on the 7th of September. There were no mobiles in those days. My first reaction was to leave the hospital. Karan went to go and get the death certificate. I went to find a phone booth, where I could call Bombay and call Feroz and say, listen, Feroz, my mother has passed away, but make sure the theatre does not shut. The show has to go on. We will not shut the theatre. So that is the concept, that is the kind of belief that we have, that the show must always go on. You don't shut for anything. The stage must never go dark. Whenever I've read a good piece of writing or literature or a play, and whenever it's moved me, I've realized that they've been extremely truthful. They've gone beyond that, you know, what one layer of mask that we all wear. I'm not talking about the COVID mask. I'm talking about the mask that we all have as humans. So I think good writers manage to discard that mask for a while and then connect. They basically want to connect to whoever's reading or whoever's listening. And by being totally honest and speaking probably from the subconscious instead of the conscious. मनोज जोशी के साथ तो कमाल का किस्सा हुआ कि हमने एक संस्कृत प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस कर दिया, एक प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस संस्कृत में कर दी कि उसके पिताजी पंडित रहे, तो मैंने कहा एक काम करते, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 92. ओके. एंड अच्छा उनसे मैंने लिखवा लिया, मैंने हिंदी में लिखा, फिर उनसे संस्कृत में करवा लिया. अब हमारी आदत थी इम्प्रोवाइज करने की, तो रिहर्सल कर रहे, इम्प्रोवाइज फिर से हिंदी में हो रहा है, अब संस्कृत कहाँ से लाएं? तो वहां पर एक बहुत बड़े प्लेराइट थे, प्रोफेसर जीपी देशपांडे, जिन्होंने धर्मशाला, बहुत ही उनका बहुचर्चित नाटक है, तो वो खड़े थे. मैंने कहा कि देखिए आप संस्कृत तो जानते हो, तो जरा हमारी मदद कर दीजिए. उन्होंने देखा मेरी तरफ कि तुम कौन हो, मैंने बताया तक नहीं कि मैं कौन हूँ. मैंने कहा ये इम्प्रोवाइज है, इसको संस्कृत में बता दीजिए आप बस. और वो पहली बार इतने, मतलब वो कहते हैं वो ज्यादा हंसते नहीं है, पर वो हंसे. और उन्होंने, तो मतलब ऐसा जुनून था कि हम सोच ही नहीं रहे थे कि किसको पसंद आए. भैया सेलिब्रेट करना है मंच. और वो एक एकांकी तो ऐसी हो गई कि 50 मिनट की हो गई. अच्छा हमारे पास वक्त होता था 25 मिनट का, ठीक है, तो अभी और तो अब क्या करें. तो मैंने कहा एक काम करते 25 मिनट पे रोक दीजिए, अगले दिन हम लोग फिर से करेंगे 25 मिनट. तो उनका फिर वही लोग कैसे आएंगे, वही लोग कैसे आएंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं है. अगले दिन मैं खड़ा रहा, मैंने बता दिया लोगों को कि कल 25 मिनट क्या हुआ था. मतलब तभी टेलीविजन पे रिकैपिंग शुरू नहीं हुआ था सीरियल में. सही है. हमने तभी रिकैप कर दिया कि कल क्या हुआ था और अगला बता दिया क्या हुआ. और कभी कभी तो ऐसा होता था भावना जी कि अंदर लोग कम थे, बाहर ज्यादा थे. और इसका कारण क्या था भैया, हम चाहते थे कि मतलब सामने एक बिल्डिंग थी, वहां से बैल्कनी से लोग नीचे देख रहे हैं, मतलब जो आ रहा है वो देख रहा है कि यहाँ कुछ घट रहा है. Thank you for tuning in. If you have liked this episode, do comment, do rate on Apple Podcasts.
Subscribe on your favorite podcast app like Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Castbox, Spotify, JioSaavn, so that you get notified when we come next. Stay tuned for the next episode with yet another guest, and until then, take great care of yourself.